जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, ऑटोमेटिकली वी टॉक अबाउट फिजिकल हेल्थ। शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड वी यूजुअली इग्नोर the mental health aspect and the social. So the WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू cope up with those things, are we productive despite uh, having to face various challenges in life. So if we are able to do so, we would say that I'm mentally healthy, I'm able to deal with my mental health adequately. Various situations in life, whether it is at workplace, family, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. Next please. So इन सब चीज़ों को लेके हम some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. तो हमारे reactions अलग अलग होते हैं. And at the same time we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्ज़ाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों? तो एग्ज़ाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है. But at the same time, after certain amount of stress, we become dysfunctional. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए एंजाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है. दैट इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प. हम लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, चाहे बच्चा हो या एडोलेसेंट हो, चाहे हम वर्किंग हैं या हम एक घर के दायरे में बंद एक हाउसवाइफ का रोल अदा कर रहे हैं या बुढ़ापे के तदार पे हैं, हर स्थिति पे वी नो दैट देर आर वेरियस चैलेंजेस. आई हैव लिस्टेड अ फ्यू विच आर कॉमनली रिपोर्टेड बाय इंडिविजुअल्स. जिसको हम कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है. अगर मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है या अगर मेरे सीनियर मेरे को हरास कर रहा है तो मैं उसको लेके क्या मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगी? ज़रूरी नहीं है. Sometimes we are able to cope up with this. We talk to our colleagues, we talk to someone how to find a way out, and we move on. Next please. So uh, if we are able to face the stress adequately, we are fine. But if we are not able to face the coping, we are not able to face those challenges, then we start having हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इश्यूज. क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज में बी at the mental level. When we are not able to deal with these issues, we become dysfunctional. I don't want to go to work because there is a harassment. I don't feel motivated enough. मुझसे पढ़ाई नहीं होती इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझसे काम नहीं होता है इसलिए मैंने आज मेट को नहीं बुलाया. So at various workplace, if when we try to avoid our responsibilities, it means that we may be moving towards a disorder. Mental illness is there. ये कहना कि कब उदासीपन, डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज़ परसिस्टेंट, I'm just giving an example of sadness, depression, which is a very common mental disorder, and it is sadness या depression is commonly used word among the public. अगर मैं इस उदासीपन के कारण फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जा रही हूँ, मैं काम पे नहीं जा रही हूँ, आई एम अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, आई एम अवॉइडिंग कुकिंग, आई एम अवॉइडिंग talking to my children, then that means there is a dysfunction at the level and I need help. How do we recognize these signs?
जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं। मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है नहाने का, मेरा को नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. So these are some of the physical somatic complaints that if one is feeling that or one is reporting, we need to take it seriously. Some of the behavioral signs include there is a sudden, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बारी पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, extremes of behavior which was not there earlier. So any change over the time which is not there, which is not acceptable by the family, that means there is some, this behavior needs to be attended to. uh, at the social level, we don't want to interact with people, we don't want to uh, respond to people, respond to family members. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम नर्वस हो जाते हैं. समटाइम्स वी से दैट मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड मे बी एन इंडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस. नेक्स्ट प्लीज. सो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोज़मर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं. वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज़ अ चेंज इन माई इंटरैक्टिव. पहले बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू any reason, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग होती है तो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता है, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज़ वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज़ अबाउट. मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस, पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है. इट शुड बी टेकन सीरियसली. इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड, दे डू say, they verbalize their problems, their helplessness, and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize later on. अरे उसने तो ऐसा कहा था. समटाइम्स इंडिविजुअल रिपोर्ट, मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. दीज मे बी साइंस फॉर साइकोसिस. समटाइम्स वी से दैट बहुत एंजाइटी, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. इट मे बी अ पैनिक अटैक. सो वी नीड टू सीक हेल्प रादर देन फेस दैट मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. नेक्स्ट प्लीज. एट टाइम्स इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो टीचर्स सेटिंग में या पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, वी हैव स्मॉल स्मॉल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनेयर विच कैन एक्चुअली टेल यू कि ये इस 10 आइटम्स में से इतना कट ऑफ 2 के ऊपर है, दैट मीन्स यू नीड टू कंसल्ट अ mental health professional. PHQ, GAD, 7 item, 9 items, it's hardly anything. Very simple items which can be used in community. Next please. सो PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में या डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ, जैसा कि डॉक्टर सागर ने भी बताया कि ये सब जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें दीज आर द कॉमनली यूज टूल्स टू आइडेंटिफाई. जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इस संदर्भ में बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में एडल्ट की प्रॉब्लम्स होती है. इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड वर्ल्ड वाइड दैट मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस दे हैव देयर ऑनसेट इन द एडोलेसेंट एज.
That's why we emphasize कि बच्चों में और adolescents में it's very important to pick the signs early so that we can prevent any severity of mental illness. जैसा कि डॉक्टर सागर ने बताया, हेल्प सीकिंग ट्रीटमेंट गैप इज वेरी वेरी सीवियर इन आर कॉन्टेक्स्ट. In the recent national mental health survey which was conducted by in many centers in India, it reported 70 to 90% treatment gap exists. That means that people may have mental illness but they do not seek help. So what do we do? Next slide please. We need to tell them that we need to seek help early, because I am just giving this example. बच्चे में हाइपर एक्टिविटी, बच्चा एक जगह टिकता नहीं है, वो बार बार भाग जाता है, खाना खाने में भी बैठता नहीं है. Hyperactivity is one illness which can be easily be recognized, but if it goes untreated, why? Because parents don't want to give medicine. If it goes untreated, it is documented that it may lead to, when the child grows to an adolescent age, he may develop conduct disorder. वो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, और बड़ा होगा अगर उसको भी psychological interventions नहीं मिलती हैं, तो its likelihood is कि he may develop habits of exploring substance use and antisocial personality disorder. So this trajectory is very well documented in the literature, and we do see it in the clinical setting. So it's very important we identify them early, we ask them to seek help early. एक जो दूसरा फ़ायदा है, अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं और हम इंटरवीन करते हैं, वेदर इट इज़ अ चाइल्ड और इट्स एन एडल्ट, it whatever the problem we are facing, whether at workplace or at home, our productivity goes down. It impacts the academic performance. So if we seek treatment, our disability goes down. There is a hope for recovery. Mental illness, most of them, they may recur. So अगर हम maintain करते हैं, हम monitoring करते हैं, then we are likely to have better outcomes. With an example of a case where there was a job instability among an adult patient and he never sought treatment. There was a doubt for whether he had childhood ADHD, hyperactivity, untreated mood disorder and personality issues. So when this family came to me with a child having problems in the school with poor academics, although she had a very high IQ. So what turned out was that the father had problems. It was leading to a lot of conflicts at home. Spouse was talking about divorce and children were having conduct traits. मेरे को पढ़ना आता पर मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं लिखूंगी नहीं. So this rebelliousness was arising not because of her own personality, but because of the home environment. Next please. So the whole family becomes dysfunctional, and if we intervene early, I started with working with the child and moved on to the adults, the family, the parents, and we were able to deal with the child problems. This helps not only to prevent mental illness, I would like to emphasize, बच्चे में पनपता दिमाग है, इस दिमाग अगर हम उसको healthy रखते हैं, healthy mind, healthy body, it also impacts his academic performance, emotional regulation, and there would be a decreased need for medication. Next please. We can see that the brain में different जो parts हैं, उनके different functions होते हैं. जो हमारा frontal part है, that helps in decision making. Amygdala, which helps in regulating our emotions. So when we are helping the child, we are helping in proper development. Next please. And this support that comes from the environment, that helps in the emotional level as well. A child would feel valued. There would be decrease in the cortisol levels, which means stress कम होता है, and there is a improved decision making. So brain, mind and our behavior, everything is interconnected. Next please. When we are seeking support, whether it is peer, whether it is a family, ASHA workers, people who can help,
definitely boost the morale, boost the confidence and our productivity. Uh, Dr. Gopal already talked about Telemanas. It's a gateway to confirm that I have health problems, I need help. To what level? That can be decided at the Telemanas level. Next, please. At the PHC, we do have primary health centers. We did a survey when we were evaluating the services in district of Maharashtra, and we found वहाँ पे उन्होंने बोला कि बच्चों में तो कोई mental illnesses होती ही नहीं है. Parents don't report. It's not that they don't report. They may be coming with headache, but actual problem may be mental stresses. But अगर हमें उनको पहचानना नहीं आता, तो we will not be able to say that there are mental illnesses coming and reporting in the clinic. So problems lie at various levels. And prevention, when we are talking about prevention, we need not just talk about emotions and brain development and thought processes. We also need to focus on how do we act at the behavioral level. If we change our lifestyle, we change our life, we equip ourselves to face these challenges. How? Balance is the answer. The work life balance, most of us are burdened with lot of work, lot of stresses, burnout, and it's not only true for the office, it's also true for any place in any context. Next, please. So we need to identify what is causing me the stress, how do I remove the stress, can I break this problem into small parts and deal with them. The crucial answer most of the time is time management. मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. हाउ डू आई आइडेंटिफाई टाइम? 24 आवर्स से 25 आवर्स नहीं हो सकते हैं. We need to find out time, we need to identify, we need to many times as a housewife says मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा है, अब बाहर जाके देख खेल लो. You play with the mobile, you watch TV. So what are we doing? We are neglecting our children for other mundane tasks. Next, please. It's true for all of us. So we need to identify how to prioritize what is important right now, decide when to do it, and if it is not important, maybe delegate to some other junior staff, and if it is not at all important, dump it. It's easy to say, it's difficult to follow. So most important is we usually say बहुत सारा काम है and we ignore our own health. So before we talk about mental health, we also talk about physical health, physical exercises, sleep hygiene. This is very important because in the technology era, we are so much dependent on our mobiles that before we sleep, we are on the mobile. When we come back from the work, we are on the mobile and the child gets neglected. So our parenting gets distorted. So sleep, diet, device-free zones, they are all interconnected. And all of this together, it will ensure that the self, I will feel healthy and the family, the home environment will be positive. When I'm talking about mental health, at the workplace, for example, what am I doing? How do I want to see myself after 10 years? Are my goals unrealistic? And my colleague is doing well, but am I at that level that I should have those goals? What these actions bring to me? Next, please. So these are some of the questions that help us to realize how I am moving on with my life. So besides my own self, I would rather emphasize that the value system, what makes me comfortable, whether being competitive is what makes me happy or whether accepting the life how it comes makes me happy. At the workplace, what gives me satisfaction and whether I'm connecting with others while I'm working, while I'm burdened with the work. To summarize, I would say whether in the 24 hours, whether I'm able to identify me time. I would say that it's up to us to identify the time. Every day it's a dynamic process. तो आज जो हम decide करते हैं कि हम आज ये करेंगे, next day हो सकता है वो नहीं हुआ हो.
So the next day to-do list changes, but we are often lazy. We don't do it. So what is required is to identify a time when you can be with your own self, just 10 minutes. And that will help to maintain balance, to know yourself, because you are different. Each individual is different. Each individual's goals should be different. And we need to prioritize. We need to say no. We need to refuse with my peers if they are insisting that try this substance, so which is very common. But most of the time we want to be in the peer, we want to be accepted in the norms, whether it is a workplace or it is at a college. Why this is happening? Because our own value system is such that we do not value our own value family systems. So most important and last but not the least is that if we feel that things are not moving right, we need to seek a professional help, whether it is a health center, it's a district hospital, or it's a private setup. So with this, I would close my presentation. Thank you.